Hare Krishna. Welcome everyone. Happy to be here with all of you. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam. First canto, chapter 7, text number 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please repeat after me. Na hyasyamyatamam kinchit astram pratyavakarsanam jahyastrateja unnadham astrajño hyastratejasa na hyasyamyatamam kinchit astram pratyavakarsanam jahyastrateja unnadham astrajño hyastratejasa na hyasyamyatamam kinchit astram pratyavakarsanam jahyastrateja unnadham astrajño hyastratejasa. Yes, anyone? Ahyasyamyatamam kinchit astram pratyavakarsanam jahyastrateja unnadham astrajño hyastratejasa. Okay. Right, everyone. Ahyasyamyatamam kinchit pratyavakarsanam jahyastrateja unnadham astrajño hyastratejasa. Okay. Anyone else? Nahyasyamyatamam kinchit astram pratyavakarsanam unnadham astrajño hyastratejasa. Okay, please repeat the word for word meaning. Na, not. He, certainly. Asya, of it.
अन्यतमम other किंचित anything अस्त्रम weapon प्रति counter अवकर्षणम reactionary जही subdue it अस्त्र तेजः the glare of this weapon उन्नद्धम very powerful Astrajñah, expert in military science. He, as a matter of fact, Astravejasa, by the influence of your weapon. Translation purport by Joint Basis Samshila Prabhupada. O Arjuna, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue this weapon's glare. The power of your own weapon. Please repeat. Oh Arjuna, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. For the atomic bombs, there is no counter weapon to neutralize the effects. But by subtle science, the action of a Brahmastra can be counteracted, and those who were expert in the military science in those days could counteract the Brahmastra. The son of Dronacharya did not know the art of counteracting the weapon, and therefore Arjuna was asked to counteract it by the power of his own weapon. Nahi asya anyatamam kinchit astram pratyavakarshana यही अस्त्र तेज उन्नत भूमि अस्त्रज्ञ शस्त्र तेज ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यवेशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्ते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। अस्य यानी इसका, प्रत्यवकर्षणम यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, अवकर्षणम अवकर्षण यानी रिएक्ट करने, कर्षण का मतलब कंट्रोल करने, उसको तकलीफ देना, कंट्रोल करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। अस्य इस ब्रह्मास्त्र का, न किंचित अस्त्रम और कोई अस्त्र नहीं है, और उन्नत दम बहुत पावरफुल है। इस अस्त्र तेज को कैसे जीतो? अस्त्र तेजसा जही अस्त्र तेज है, अस्त्र तेजसा अस्त्र के तेज से ही अस्त्र के तेज को जीतो, क्योंकि आप अस्त्रज्ञ हो, क्योंकि अस्त्र के बारे में जानने वाले ज्ञाता हो। बिकॉज योर अस्त्रज्ञ, आप अस्त्र से ही, जैसे कांटे से ही कांटे को निकालने वाला बात हुआ,
राइट। ये नहीं सोचना चाहिए कि दो ब्रह्मास्त्र ऐसा है जैसे इधर से एक ब्रह्मास्त्र आए इधर से एक ब्रह्मास्त्र, जैसा सीरियल्स में दिखाते हैं, इधर से एक ब्रह्मास्त्र आए इधर से एक ब्रह्मास्त्र आए, दोनों टकराए और ऐसा हो गया। ऐसा नॉट लाइक दैट। एक्चुअली इट्स लाइक using the power of the same brahmastra against itself. ब्रह्मास्त्र के पावर को ब्रह्मास्त्र के खिलाफ यूज कर। That's what it actually means. So वो कैसे? Because एनर्जी को डायरेक्ट करता है क्या? मंत्र। मंत्र क्या करता है? ब्रह्मास्त्र का मंत्र जो है एनर्जी को डायरेक्शन देता है, जाओ उसके ऊपर जाओ। जैसे अश्वत्थामा ने बाद में भी एक बार ब्रह्मास्त्र चला किसके ऊपर? परीक्षित महाराज के ऊपर, जो उनकी माता के गर्भ में थे। इमेजिन, गर्भ के अंदर शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के में इतना पावर है वो कि पूरा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट इट हैज बीन डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड वो एनर्जी, दैट एनर्जी इज फॉलोइंग दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन फॉलो कर। और वो डायरेक्शन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है कि गर्भ के अंदर शिशु के ऊपर डाला तो माँ को भी कुछ महसूस, मतलब माँ, जो माता है जिनके गर्भ में बच्चा है, उस माता को भी कुछ नहीं लगा। How precise it is, right? So the same mantra you direct against the Brahmastra itself. जैसे कोई जीनी है वो किसी को भी मार सकता है, तो बोलो अब आप अपने आप को मारो, तो उसका चैलेंज लाइक दैट, यू नो। ब्रह्मास्त्र का मंत्र उन्होंने ऐसा उच्चारण करना जानते हैं ताकि वो ब्रह्मास्त्र का एनर्जी ब्रह्मास्त्र के ऊपर ही against itself. Actually, Brahmastra is not like a bomb exactly. It's basically वो ब्रह्म ज्योति सब जगह है। क्या? जैसे मॉडर्न एटॉमिक वेपन्स कैसे यूज करते हैं, मे बी फ्यू ग्राम्स ऑफ यूरेनियम और व्हाटएवर we destroyed, converted into energy, right? Fission reaction. So basically what they do is little amount of matter is converted into energy, right? तो उतना मैटर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, एनर्जी में कन्वर्ट किया। बट बेसिकली ये जो है ब्रह्मास्त्र, इट इज नॉट लाइक दैट, ऑल्दो द प्रिंसिपल इज सिमिलर। इट इज लाइक ब्रह्म जो एनर्जी है, विच इज बेसिकली द इंग्रेडिएंट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट इज ब्रह्म? ब्रह्म मतलब द प्राइमोर्डियल स्पिरिचुअल सब्सटेंस, जिससे सब कुछ बना हुआ, जिससे सारे बाकी एलिमेंट्स सब बने हुए हैं, राइट? यू नो, यू कैन से प्योर एनर्जी, प्योर एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म, वो है ब्रह्म, राइट? एंड दैट इज एवरीवेयर बिकॉज एवरीथिंग इज मेड ऑफ ब्रह्म ओनली। सब कुछ ब्रह्म से ही बना हुआ है, राइट? ऑल मैटर। सो देयरफॉर ब्रह्म सब जगह है। तो व्हाट दिस मंत्र डज इज, दिस मंत्र उस ब्रह्म को, उस एनर्जी को ऐसे डायरेक्ट करता है to achieve a particular purpose. So ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह से एनर्जी आती है, ऐसा नहीं, एनर्जी सब जगह है। So that is directed in a certain way. So the entire universe is basically activated against someone, to be precise. Entire energy of the universe is activated against your target, to destroy your target. So ऐसा नहीं कि एक और ब्रह्मास्त्र, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक एटम बॉम्ब डाला, एक और एटम बॉम्ब डाला। It's not like that. It is like
मंत्र क्या करता है, ब्रह्म को, ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र है तो इसलिए ब्रह्म को एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट करता है। तो ये जो दूसरा मंत्र से क्या होगा, वो जो डायरेक्शन दिए हैं अब वो डायरेक्शन कैंसिल, अब दिस यू फॉलो द न्यू डायरेक्शन, लाइक दैट। तो रोबोट को आपने प्रोग्राम किया डिस्ट्रॉय दैट टारगेट, अब वो नाउ दैट रोबोट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट टारगेट. Now someone has hacked into the software of that robot and is going to reprogram it. Now, no, he's not enemy, he's friend. And you destroy, instead of him, you destroy him. So then the robot is reprogrammed. So like that, the energy always follows a direction. Energy or energetic, there's always two things. Energy is never independent. Energy कभी independent नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता. शक्ति हमेशा अधीन में रहती, शक्तिमान के निर्देश. एनर्जी कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा हो, उसको डायरेक्ट करने वाला कोई चीज, दैट इज द एनर्जेटिक. एनर्जी एंड एनर्जेटिक, शक्ति एंड शक्तिमान. तो शक्ति को डायरेक्ट करने वाला है द पर्सन हु इज होल्डिंग द वेपन, ही कैन डायरेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ अश्वत्थामा को ये सेंस नहीं पता कि उस एनर्जी को उसी के अगेंस्ट कैसे यूज करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें. अर्जुन नोस. अस्त्र तेज अस्त्र तेजसा जही, अस्त्र तेज को अस्त्र तेज के माध्यम से जीतो. अस्त्रज्ञ, तुम अस्त्रज्ञ हो इसलिए अस्त्र तेज को अस्त्र तेज से जीतो. तो इस प्रकार से बता रहे हैं. So therefore, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. So your own weapon का मतलब यानी कि एक और weapon. Weapon is what? Weapon is not a thing. Weapon is the mantra. और वो मंत्र जो है, it is like the code. Actually अस्त्र वही है. अस्त्र क्या है? अस्त्र मंत्र ही अस्त्र है. It is the code of information, which will information is very powerful. Information is direct करता है. Right? What makes the plant grow? Information. Right? There is information stored in the seed. Seed के अंदर information है in the form of DNA. What does DNA do? DNA में क्या है? Information है. It gives information on how the cells should act. Cells को कैसे काम करना है बताता है DNA. Cells को कैसे multiply करना है. So वो instruction के अनुसार cells act करते हैं, and वो cells act करते हैं, फिर वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और सर्टेन वे में मल्टीप्लाई करते हैं. किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? जैसे स्पर्म एंड ओवम मिक्स ना, स्पर्म एंड ओवम जब दे मिक्स, हाउ इट फॉर्म्स सो मेनी ऑर्गन्स, राइट? एंड दैट आल्सो of the same genes like the parents, because all that information is contained in what? In the seed, in the DNA. DNA में information है. Information means direction. वो DNA में उसको एक प्रकार से एक कोड छुपा हुआ है. A code. That code is basically giving direction to the cell on how to behave. एंड उस इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है सेल, एंड उसको फॉलो करने से इट ग्रोस इनटू either a plant or a human being or whatever. Correct? So that is information which is coded in the DNA, in the nucleus.
So the world is nothing but information. Information is ruling the world. Not only human beings, सिर्फ human beings ही नहीं, सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, not only living beings. Even in the matter also there is information coded. How does the atom know how to behave? How does the electron know what to do? Right? There is information. There is some code which is put inside. And that information, that instruction, not only it has information, it also has power, potency. If the information is there, why the cell should act according to the information? अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ से कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना? तो इंस्ट्रक्शन तो दे रहा हूँ लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना? मैं इंस्ट्रक्शन दूं तो आप फॉलो क्यों करोगे? अगर मेरे इंस्ट्रक्शन में पावर हो आपको इन्फ्लुएंस करने का तब फॉलो करोगे. कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देगा, दे दो तुम्हारे सारे पैसे मुझे दे देंगे, नहीं देंगे ना. See, information should also have the potency to influence. Correct? Information है लेकिन nobody cares for it, then what is the use? The information should have the ability to affect and influence, to make things happen. तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति. ज्ञान शक्ति is the information. क्रिया शक्ति is the potency to make it happen. Correct? आपके पास कोड्स है, इंफॉर्मेशन है, but if it is of no use, no, मतलब क्या है उसका? But if that code is making things happen, like say password of a computer, what is it? Information only. You put the right information, then the computer will open. आपका बैंक में से अकाउंट में से 10 लाख रुपए किसी को देना है मोबाइल से. What do? You type in a certain password or fingerprint or whatever, and that information carries the potency to transfer that money, to get that thing done. But अगर आपके अकाउंट में 1 रुपए नहीं है तो आपके इंफॉर्मेशन से क्या फायदा? Correct? So the point is that information is the instruction और वो ज्ञान शक्ति है. पर at the same time उसको एग्जीक्यूट कराने की ताकत भी तो होना चाहिए. सीड में डीएनए है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है, बट वो सीड डिफेक्टिव है, समथिंग इज रॉन्ग, या तो सूख गया है नहीं तो कुछ है. Even if you put it, it's not going to grow in the plant. You should also have the ability, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस बीज से एक वृक्ष को ला सके. Right? So the seed has the power to get things done, to change things, to take the nutrition, to convert it into cells and grow in a certain way. Correct? So mantra is like that only. What is that information? That information is nothing but the power of the Lord. जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक फैक्ट्री है, उसको पूरा बनाने का इंफॉर्मेशन कहाँ? ब्लूप्रिंट के अंदर. ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट में पूरी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ क्या बनना है, कैसे बनना. यस, the blueprint, the engineer's drawings and whatever is there,
It has all the information, and if it is executed properly, then जो blueprint में है वही आपको physically देखने को मिलेगा. Correct? Yes or no? So now how that information came? Did that blueprint come by chance? It is a product of intelligence. Information is always a product of. Information does not come by chance. Blueprint by chance नहीं होता. It's a complex factory का blueprint by chance आता है. अरे कितने इंजीनियर बैठकर कितने सालों मेहनत करते हैं तो ब्लूप्रिंट बनता है. करेक्ट. उसको बार बार चेक करके वेरीफाई करके सब. It just cannot happen by chance. Similarly, so information is a product of intelligence. Information is not a chance thing. तो उसी प्रकार से डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है तो कहां से है? Must be a product of intelligence. So basically, what is the function of DNA? It is nothing but to carry information. Correct? उसी प्रकार से सेल्स को कैसे एक्ट करना, प्लैनेट्स को कैसे एक्ट करना, there is a code. How they are supposed to interact, what are the laws of nature, it's all the code. So this whole universe is acting based on information. Correct? अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यूएसबी ड्राइव और इंटरनेट और डीएनए, क्रोमोसोम्स. What is the best way to contain and carry information? Sound. It's a vibration, right? Vibration, what does it do? It moves. What is vibration? One particle pushes another particle. It transmits energy. Yes or no? So energy transmission का सबसे subtle, you know what is the meaning of subtle? That which has the power to move things, bigger things. यहाँ छोटा सा बटन दबाते हैं, वहाँ इतना बड़ा दरवाजा खुल जाता है. Right? So in a small information, you are by giving a small bit of information, you are moving a huge thing. Right? So अगर उसको और कंप्रेस करना, सबसे compressed form of information क्या है? What is the most compressed form of information? Codified sound. Codified sound is the most what do you say? Compressed. उससे और कैसे compress कर सकते हैं information? Information को सबसे ज्यादा compressed और condensed way में अगर रखा जाए वो है मंत्र. Right? So you are codifying instructions in the form of sound, in the form of instruction, in the form of mantra. Yes. And it also should have a person who is directing. कोई भी इंफॉर्मेशन बाई चांस नहीं आता ना. इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन देने वाला है. इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है to produce a certain result. It has a purpose. So that is a ichha shakti. You have a desire to achieve a certain objective. So उस इच्छा शक्ति से कि मुझे ये चीज अचीव करना है, मुझे ये काम करना है, उस इच्छा से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और उसके ऊपर पावर भी दूंगा to get those things going.
फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा है एक बड़ा बिल्डिंग बनाना, इच्छा, पहले तो इच्छा होना चाहिए एंड देन फिर उसका प्लान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और ये सब के बाद कुछ पावर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, देखो ये है ब्लूप्रिंट, चलो आपका ब्लूप्रिंट फोल्ड करके अलमारी में रखो, ऐसा नहीं, राइट? You should also have the power to execute it. Power means in the form of money or in the form of resources. Correct? So you should have the desire, you should have the information, and you should have the power to execute. Yes? तो तीन शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये तीन शक्तियां बेसिकली यूनिवर्स को चलाती हैं, और ये तीनों शक्तियां हैं किनके? ईश्वर के। So therefore, मंत्र का साइंस ऐसा है बेसिकली, साउंड वाइब्रेशन से सब कुछ आया बोलते हैं ना, एवरीथिंग केम फ्रॉम साउंड, राइट? बिकॉज फर्स्ट द इंफॉर्मेशन इज गिवन, और उस जैसे एक छोटा सा बीज से पूरा वृक्ष आता है, with so many different parts and all, and every part has a different function. हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स? एवरी पार्ट हैज ए डिफरेंट फंक्शन। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सेल के अंदर है। सो उसी प्रकार से वन साउंड वाइब्रेशन हैज द पावर टू manifest this such a complex universe with all the planets, with all the different living entities in each of those planets. तो इस तरह से, तो यहाँ पर बेसिकली अर्जुन वो साइंस को जानते हैं, कैसे मंत्र की शक्ति से और को एक्टिवेट कर सकते, और उसको किस तरफ डायरेक्ट करना, कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब अर्जुन ने सीखा। भगवान कितना एक्सपर्ट लेवल में, अस्त्रज्ञ यही अस्त्र तेज, अस्त्र तेज के अस्त्र तेज को अस्त्र तेज से जीतो, इसके लिए और कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, दूसरा अस्त्र से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। Nuclear weapon cannot be contracted by कोई TNT bomb या something like that. No, right? Nuclear है what bomb? Thirsty bomb. So of course we have no information, we have no idea कैसे nuclear energy को nuclear energy के against use करना, we have no idea. We only have the gross method कि भाई उस बॉम्ब को फोड़ो बस, लेकिन उस एनर्जी को कैसे डायरेक्ट करना, we don't. But that is a real science actually. आप एक साउंड बोलो और हर एटम, हर फोटोन is following that. We may say, oh, how it is possible? Because there is information, no, inside that. They are being directed. They are being already directed by something. Only thing is, we don't know how to access it. So therefore, there is Paramatma. Ultimately, direction देने वाला कौन है? Paramatma. He is in the center of every atom. He is giving the direction. Correct? So therefore, one who is totally surrendered to Paramatma, he desires something, Paramatma himself will direct the whole energy. Not that only the universe is under the control of Paramatma. Every atom, every molecule, and every
particle of light is also totally under the control of Paramatma, being directed by Paramatma. So, if you have connection with Paramatma and you are desiring only for his service, then Paramatma will also direct everything as per your desire. यहाँ परमात्मा तो गाइड कर रहे हैं, कृष्ण गाइड कर रहे हैं, ऐसा करो, और कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और कृष्ण के दिए हुए इंफॉर्मेशन से अर्जुन बाकी एनर्जी को कंट्रोल करना है. करेक्ट. सो अल्टीमेटली डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस कहां से आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? इसलिए तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदक्षिता. भगवान बोल रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदक्षिता. सभी प्रकार के बीज मुझसे आते हैं, सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन डायरेक्शन सब मुझसे आता है. मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च. So the supreme source of information is Krishna. So all the information, all the directions, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब उनके कंट्रोल में. करेक्ट. तो इसलिए अब हम उनके प्रति सरेंडर हो जाएंगे. When we serve Krishna, when we surrender to Krishna, when we love Krishna, then what happens? Then all those energies will become favorable to you. The entire universe and all its energies become favorable. ऐसा अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तो ब्रह्मास्त्र भी अल्टीमेटली कृष्ण के कंट्रोल में है. वो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने का टेम्पररी पावर वो भी कृष्ण ने दिया आपको, पर आप उसको मिसयूज करो. अल्टीमेटली कृष्ण हैज द पावर टू काउंटरैक्ट दैट. So therefore, the real way to control everything is to surrender to the supreme controller. और भगवान बोलते हैं क्या, वो क्या है 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति. One who serves me with love, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, उनको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं उनको मोटिवेशन देता हूँ, ताकि वो they can get free from suffering and they can come to me. So the right information will be given by Krishna. कृष्ण से इंफॉर्मेशन लेके तो जीते ना पांडवों ने, ये तो पॉसिबिलिटी थी क्या? कृष्णा gave the information at every step. ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. So therefore, if we surrender to Krishna, कृष्ण भी हमको भी इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए. He gives the intelligence, he gives the information, he also gives the inspiration. Correct? तो इस प्रकार से now अगर इंफॉर्मेशन कृष्ण से आता है तो कंफ्यूजन भी कृष्ण से आता है. कंफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ misinformation or incomplete information or lack of information. कोई कंफ्यूज क्यों है? पूरा ज्ञान आधा ज्ञान नहीं होता, या तो ज्ञान या अज्ञान दो ही होते. करेक्ट. Either he knows or he doesn't know. So it is because of that proper information is not given by Krishna. तो ज्ञान में इसलिए रहता है ना कि उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं दिया जाए. कृष्ण से आई द परफेक्ट नॉलेज. सज्जनतस्तौ च भद्राणि. Krishna gives knowledge from within. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित.
Krishna gives that inspiration, he gives that knowledge. But वो अगर नहीं मिलता है तो हम confused रहते हैं. So always confused. That sense, the ability to understand, is within man. Say 100 scientists together in the world, 100 scientists, Nobel Prize winning scientists will come, and they will tell you, correct, that you are not hungry. They'll prove by science, right, and tell you that you are not hungry. But you are feeling hungry. Whom will you believe? So 100 scientists are your own feeling. And Gurshan Bro, आपको भूख लगी है. You are feeling it. And some big scientists, Nobel Prize winning scientists will come and tell you, oh, you are not hungry. And we have 20-volume thesis to prove that. What will you say? You are perceiving it, right? Correct? So scientists may say what they want. They can say what they want. But we have our own understanding of nature. Scientists may say, oh, you are just a bag of chemicals. Right? But I know I am conscious. I know I have a conscience. And I know if you just think a little deeply, or if you just थोड़ा सा अगर हम सोचें, थोड़ा सा हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करें, हम देख सकते हैं कि हम जो है शरीर से अलग. To understand that your soul is not a big difficult thing to understand, right? Dead body and living body, right? So dead body and living body has all the same ingredients, and if you say it is just a reaction, it is just electric signals, then why we can't start those signals? Dead body. So therefore, that and many other things also, we can perceive that our consciousness, by our own consciousness, scientists may say whatever he wants, but आपके अंदर consciousness say, do you need a proof? Do you need a scientific proof? No. You know you have consciousness because you feel it. Correct? So we believe in living proofs, not dead matter. When Prabhupada was asked, scientists ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल. We believe in living consciousness. That is the proof. That is the best proof. We don't know. अभी एक न्यूज़ आया, Chandrayaan 3 is going to the moon. Correct? They're sending rovers. Chandrayaan 1 में उसको पता चला कि कुछ water molecules are there. Yesterday I was having a discussion with Shubhra. He was telling me that there is a Hollywood movie or Bollywood. Hollywood. पहले देखते थे, आजकल नहीं देख रहे. लेकिन एक मूवी ऐसा था कि in that movie a person would see in a desert, पूरा desert है, कुछ नहीं है, रेत है या मतलब something, मतलब just a desert, nothing, no life. But there are some special specs. If you wear that specs, immediately you see that there are so many people, so many things going on in the same place. And when he removes the specs, again he sees only desert. Even a Hollywood director can imagine something like that. So point is that because we have only experience of life in a certain way, we don't have experience of life in a different way. If a fish in water comes to the land, it will say there can be no life on land. Because its experience is different. उसी प्रकार से we see life in a certain way. But हमें क्या पता? There may be life which is made of different elements.
Somebody's body is maybe made of fire. Somebody's body is maybe made of gas. How do you know? How do you know that life is like only like what you are experiencing? So the point is that just by seeing the external matter, you cannot get the information. The information comes from your experience, from your internal experience. Experience is not always external. बाहर से experience है, वो experience गलत हो सकता है मैं उसको पत्थर जैसा देख रहा हूँ, लेकिन वो पत्थर नहीं है, कुछ और है. My external perception may be wrong, but my own experience cannot be wrong. हो सकता है मैं चांद पे जाके वहां लाइफ को देख नहीं पा रहा, वहां हो सकता है लाइफ हो लेकिन मैं उसको नहीं देख पा, ये हो सकता है ना. लेकिन मुझे फीलिंग्स है, मैं कॉन्शियस बीइंग हूं, ये झूठ नहीं हो सकता, बिकॉज इज माय ओन इंटरनल एक्सपीरियंस. सो किस एक्सपीरियंस पे हमें फेथ रखना चाहिए? आवर ओन इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, और एक्सटर्नली आप क्या चीजों को देखें, विच इज बिगर प्रूफ. So Vedic way of proof is your experience of consciousness, not just external fossils or क्या बोलते हैं, कुछ प्रकार के पत्थर, कुछ प्रकार के वो चीजें. Because after all, we are such a tiny being in this huge universe. It's like a small amoeba trying to understand Earth planet. We are such a tiny being. By definition, we should understand that our experience and our ability to understand itself is very, very, very limited, very small, tiny. So, अगर हम सब कुछ समझना चाहते हैं, that is not going to be reality. It's not going to be. But yes, हम कुछ experience कर रहे हैं. जो हम experience कर रहे हैं, जो हम feel कर रहे हैं, that is true. And what we are feeling and experiencing, one thing we can understand that there is, by our own experience, हम ये समझ सकते हैं कि हर चीज के पीछे एक कॉन्शियसनेस है, हर चीज के पीछे एक डायरेक्शन. हमारा ओन शरीर, हमारा ओन मन, our own body and mind, how it is working, there is a plan that even a small child can understand. There is some plan in this universe. There is some harmony in this universe. Right? हर चीज के पीछे कुछ तो प्लान है, कुछ तो पर्पस है. इवन अगर कॉमन सेंस भी यूज करें तो हम समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन एज अ सोर्स. Every information should have a source. Even हम भी एक बुक लिखते हैं. Book is nothing but a collection of or a compilation of information, right? But that information comes from a conscious being. Every information comes from a conscious being. So universe का information भी a conscious being से आना चाहिए. Is that not a natural conclusion? Is not within our experience? So therefore, so the point is that if someone is, if you have too much trust, प्रॉब्लम यह है कि हमको ट्रस्ट गलत जगह पर है. हमको ट्रस्ट कहां पर है? साइंटिस्ट के ऊपर. We trust the scientists. Why? Because they have given you mobile phone, because they have given you aeroplane, or because they have given you
internet, or because they have given you, I don't know what else, so many things. That's why we trust them. They have given you car, aeroplane, this kind of things. That's why we trust them. But the thing is, वो ये सब चीजें उन्होंने दिए. But life was there even before these things. So why don't we see that someone has given information on how to build a mobile? We trust them. But why don't you trust someone who has given information on how to breathe, how to digest? वो information कहाँ से? It is embedded in our system. That information also came from someone. No, why don't you trust them? Why don't you trust the source or the person who has given you information on how to breathe, how to eat, how to live, how to digest, how to run, and how to defend from disease? Correct? All that information आपके शरीर में है कि नहीं? आप प्लान करके सांस लेते हो, आप प्लान करके खाना पचाते हो. जब कोई वायरस अटैक करता है तो आपको पता भी रहता है कि मेरा वायरस अटैक किया, आपको पता भी नहीं रहता है, फिर भी योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इज फाइटिंग and protecting you. Correct? So where is all that information coming from? कहीं ना कहीं से तो आ रहा है. So why don't we trust that source of information rather than just some little information on how to make mobile phone? That is our chance. Even the scientist is catering to your common sense, right? अगर आपके अंदर सेंस है तभी तो साइंटिस्ट भी आपको कुछ समझा पा रहे हैं. तो आप अपने सेंस पे ट्रस्ट करो, ना कि साइंटिस्ट पे. साइंटिस्ट ने आपको सेंस नहीं दिया. सेंस आपके अंदर पहले से है और उसी सेंस को साइंटिस्ट कुछ इंफॉर्मेशन दे. तो आप अपने ओन सेंस पे ट्रस्ट करो ना. If you trust your own sense, then use that sense to understand कि साइंटिस्ट हमको दे क्या पा रहे हैं. Only certain gross things with a very, very limited understanding of the universe. But if you use the same sense, you will understand that there is a plan in nature, there is a intelligence in nature, there is a harmony, there is a system, and there should be a brain, there should be an intelligence behind that system. Why don't we trust that information? Why don't we trust that intelligence rather than these limited specks of dust whom we call as scientists? And that is another discussion. In dust particles पे ट्रस्ट करने से अच्छा हम ये सारे इंफॉर्मेशन के सारे सिस्टम के सोर्स जो है उन पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते? Which is more logical, you tell me. Our own life is teaching us. Sun is rising, flowers are blooming, there is a harmony. We are eating, we are digesting, we are running, we are thinking, we are feeling, we are living. There must be some wonderful plan. There must be some wonderful design. So that itself is a basic common sense, which nature has provided you. You don't have to take it from scientists. आपको कैसे जीना है ना? कैसे जीना है हर प्राणी को पता है.
क्या साइंटिस्ट आके सिखा रहा है किसी जीने? Nature has created a system. Every plant knows how to live. Every animal knows how to live. How to defend, how to live, how to eat, how to sleep, how to everything, procreate, everything is there. And we are also given that sense by nature itself. So if we use that sense, it is very clear. So nature has given you a system wherein you can very happily live, right? And the scientist will come and tell you, oh, that is wrong. Okay, scientist ji, what alternative can you give me? आप हमको क्या दे सकते? In the future, after 1,000 years, we will give you medicine which stops old age and death. Now you die. So आप बोल रहे हैं आपका घर टूट सकता है, ये छत गिर सकता है, ये छत गिर सकता है, इसलिए बाहर चले जाओ, इस बिल्डिंग से बाहर चले जाओ. बाहर जाके कहाँ जाऊंगा? हाँ, मेरे पास तो कोई बिल्डिंग नहीं है, तो सड़क पे बैठना पड़ेगा. You tell me. He has no alternative. According to his this thing, everything is happening by chance. Tomorrow asteroid may come and hit and everything may die. Tomorrow something may happen and Earth's axis may North Pole and South Pole reverse हो सकता. So there's a shifting. Something may happen. Many things may happen. हजारों चीजें हो सकते हैं. उसमें से कोई भी एक चीज भी गड़बड़ होगा, you can be wiped out. So many ways life can be wiped out. So you tell me, is that is that giving you any hope or any shelter? But whereas nature is giving us already the best shelter. We are already sheltered. Therefore, the scientist with his very, very limited and imperfect understanding, he is not able to give you any shelter. But on the other hand, nature has already given you the best shelter. Your own sense tells you. So it is just a very, very poor investment to invest your faith in someone who cannot give you any proper answers to any questions. So another right investment is to invest your faith in the supreme source of all information, the supreme source of all creation, that is God. That is more sensible. Yeah, sensible. बताओ, जो आपको हवा, पानी, खाना, शरीर, प्रकृति सब प्रोवाइड करके आप ऑलरेडी वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो, तो वो सिस्टम को के पीछे जो है उसको ट्रस्ट करना बेटर है कि समवन हु हैज गिवन यू फ्यू टॉयज, दो चार खिलौना दिए, इससे आपका जिंदगी और मिजरेबल हुआ है, उसको ट्रस्ट करना इंटरव्यू. ये खिलौने के बिना भी और हम जी रहे थे और अच्छे से जी रहे थे और स्वस्थ और हैप्पीली जी रहे. और ये खिलौने जब से आए और जब से उन खिलौने से खेलने लगे, we are more miserable, right? You tell me, life is more miserable before mobile phone or after mobile? और दो चार खिलौने दिए, it didn't make your life any better. Before that you are already living happily. Now should we
trust the system that has given us everything so perfectly. You know, it is so perfect. Or just you trust on someone who has just made your life more miserable, and he has no answers also, there's no solutions also. Your own sense will tell you where to put that faith. Put faith in the supreme source. That's why in Gita Krishna says, you have to put faith in me. Ashraddhana Purusha Dharmasyasya Parantava Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara. Those who don't have faith in me, Krishna cannot help them. Simple. अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा? You're on your own. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki. So, any questions? Unmute that. Okay, Iskan Sagar. Yes, Iskan Sagar से कौन है? बोलो. मेरे पास ये है कि जैसे कि पहले ब्रह्मास्त्र वगैरह रहते थे, तो जैसे मतलब इस टाइम में साइंस मतलब डेवलप करती जा रही है, न्यूक्लियर वेपन और एटॉमिक वगैरह बना दिए, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ब्रह्मास्त्र भी मतलब ऐसा बना लेगा एक दिन, या मंत्रों की शक्ति वगैरह से ऐसा कुछ उसको पता चल जाए शास्त्रों का अध्ययन वगैरह करके, तो पॉसिबल है कि वो ब्रह्मास्त्र भी बना देगा फ्यूचर? ब्रह्मास्त्र एक वस्तु नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ. ब्रह्मास्त्र इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. बम जैसा ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा फिजिकल वस्तु नहीं है. ब्रह्मास्त्र एक इट्स अ कोड, इट्स अ मंत्र. जो इंफॉर्मेशन कैन एक्टिवेट द एनर्जी अराउंड यू. और द क्रिएटर ने जब बनाया, वो सृष्टि की शुरुआत से ब्रह्मास्त्र है. क्रिएटर ने जब बनाया, लाइक यू नो, जब एटम बॉम्ब बनाया जाता है ना, या कोई यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड, राइट? तो वो भी बताया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड. तो इस तरह से वो कोड है, यू नो. एंड ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया उसको कि ये जो मंत्र बोलता है, the universe will obey his command. And that mantra, of course, is not given to everyone, obviously. But if you get that from the right source, you can use that code and the universe will obey you. Master a code. It's not an invention. It is not an invention. It is made right from the beginning of creation. And you just have to know that code. और वो कोड आप permutation combination से नहीं बना सकते, because very complex. You should get it from that source. Who knows that? ब्रह्मास्त्र ऐसा है, सारे अस्त्र ऐसे ही हैं. There are codes. जैसा अग्नि अस्त्र है या नागास्त्र है, you know, it's also a code. It is given by whoever demigod is controlling that department, right? हर बिल्डिंग में वो रहता है ना, या हर फैसिलिटी में ऐसा रहता है. इमरजेंसी में emergency shutdown, there is a measure for it. So like
every demigod, every department, जैसे अग्नि है, वायु है, वरुण है, they are all different departments. तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके पास कुछ कोड्स रहते हैं, उस कोड को यूज करके उस एलिमेंट को कंट्रोल किया जाए. वरुण देव कैसे वरुण को पानी को कंट्रोल करते हैं, अग्निदेव कैसे अग्नि को कंट्रोल करते हैं. They must have some information or some code which is controlling. वो कोड अगर आपको देंगे तो कोड से आप भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा. So therefore Vedic process is not new invention. वैदिक प्रोसेस में कोई न्यू इन्वेंशन नहीं होता है. वो सृष्टि की शुरुआत से ही है, बस उसको जानने का और यूज करने का रहता है. और इंफॉर्मेशन हमेशा नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जाता. नॉलेज में भी लॉस्ट, नॉलेज इज नॉट गेन्ड अकॉर्डिंग टू द वैदिक अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज गेन नहीं किया. आप बोल सकते नॉलेज तो हम गेन करते हैं. नो, नॉलेज गेन कहां से करते हैं, कहीं से तो करते हैं जहां से नॉलेज है. इट्स नॉट दैट वी इन्वेंट, वी मेक न्यू नॉलेज. नॉलेज इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हायर सोर्स. इसलिए ब्रह्मास्त्र नया इन्वेंट नहीं होता है, वो तो पहले से शुरुआत से ही है, तो उसको जानने का, सीखने का. ब्रह्मास्त्र किसने बना, ब्रह्मा जी. और वो ऋषियों को दिए गए, कुछ कुछ ऋषियों को दिए गए, उन्होंने उनके व्यक्ति को दिया. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. क्वेश्चन पूछने वाले क्या है? ओके. ऑफलाइन, ऑनलाइन? ओके, ऑफलाइन. ऑफलाइन विल टेक 2 questions, then we'll, yes. That is not experience, that is imagination. इसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, वो इमेजिनेशन. But experience is different than imagination. Different from imagination. What is the experience? The fact that I am breathing and sitting here, there is experience. It's not imagination. The fact that I am alive, it is not imagination, it is experience. The fact that there is life on earth and we are all safe, protected, is it experience or imagination? Experience. उस एक्सपीरियंस से इतना कंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज अ सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम सोर्स और सुप्रीम brain, and whoever that belongs to, we call as God. So that is experience. And there are many things which are beyond your experience. तो God का नाम क्या है, God क्या करता है, that is not experience, right? That is information. But when you take that information and apply, then that information can become converted again into experience. So when you chant, say, इनका नाम ये है, इसको chanting करो, आपको ये result है. So when you chant, when you follow the process, again you are experiencing the hand of God. बोलते हैं ना, seeing a video. SBK Shoma, very nicely like that. Devotees बोलते हैं, oh, Krishna arranged this. Krishna arranged that. It happened like this in my life. It is not imagination, it is true.
Because it's experience. When you start practicing devotional service, you will see that life में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो वैसा होना possible नहीं है, which clearly show there is a hand of God. And that is your experience. When you apply the process, you will get the experience. And neophyte devotee, for him, it is not so much experience. For now, is we practicing for so long time. उनके लिए वो experience है, क्योंकि वो apply कर रहा है और apply करने का result he is seeing in his life. और वो main experience क्या है? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, पद और मात्सर्य are reducing, or they're getting purified. That experience. What does the process promise you? भक्ति का प्रोसेस क्या प्रॉमिस करता है? ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा प्रॉमिस करता है। ये करोगे तो you become purified. आपके अंदर you'll be able to control your senses. You'll be able to be less troubled by the negative thoughts. You'll be free from material bondage or attachments. So those things, when you are experiencing or applying, that is experience. Then it is no longer imagination. It is a reality which you are facing in your life. Okay? क्या? You are really stupid. I'm sorry to say. Someone has said something. That information is stored in many ways. Even today, modern technology. कोई किसी ने बोला उसको एक बुक बना सकते, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, 100 साल बाद भी कोई सुन सकता है। करेक्ट? या किसी ने बोला, किसी और ने सुना, और वो सुना, और वो किसी और को बोल सकता है, वो किसी और को बोल सकता है। ऐसा 1000 5000 साल बाद भी वो इंफॉर्मेशन जिया रह सकता है। Your thinking is so gross. Your thinking sound means only the physical sound. I'm not talking about the sound. I'm talking about the information carried in that sound. That information can be preserved in many ways, especially through the person who is hearing. So that's what I'm saying. इसलिए sound जो है, it is the best form of compressed information. Most compressed form of information. बॉडी में हम लोग तो मतलब बेस्ट करने पॉलिसी, लेकिन अगर हम वो एक टेक्स्ट मोबाइल फोन उसमें से प्रोग्राम मतलब 1 ही मिनट के अंदर बहुत सारी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर साउंड में अगर देखते तो कोई अगर बोलता तो कम ही बोल पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से वो आ रही तो मतलब ज्यादा अच्छे से मतलब कंप्रेस हो रही है। Sound means not just the sound that we make. There is a sound, primordial sound behind the universe. Uska, the most compressed form of sound is the mantra. Mantra सबसे compressed form of sound.
आप एक स्पीच दे रहे हो एक अलग बात, बट मंत्र एक अलग चीज। when you chant a mantra, उस मंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए आप घंटे घंटे लेक्चर दे सकते, बट दैट मंत्र हैज द कोड, राइट? like a formula. You may say E equals mc square, right? It's just a small short thing, but it has a code. It has the information that governs that practically the whole universe, right? Like a formula. Right? The mantra is like a formula. When you chant, it has the information that can activate a certain type of energy. ठीक है? जब मतलब मंत्र के साथ वो उसका जैसे वीडियो है, ऑडियो है, तो डाउनलोड होगी तो देख सकते हैं। तो जो ट्रैवल करने का उसको कंप्रेस मतलब एक ही टाइम में मतलब बहुत सारा उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। कनेक्ट है तो एक टाइम नहीं देना चाहता electromagnetic waves, huh? There is also sound. There is also type of sound only. Sound means not only the certain sounds you can hear, certain sounds you can. It's a vibration, right? It's a vibration of energy. The sound, certain sounds are produced by humans. Certain sounds are produced by humans. Certain sounds are not produced by humans. Right? साउंड का मतलब यह है कि एक कोडिफाइड information, right? That codified information can be understood by humans in the form of sound. लेकिन वो sound originally humans के द्वारा नहीं दिया गया. It is originally come from God. ब्रह्मा जी ने दिया. In human society, it has come in the form of the sound that you and I can produce. Correct? उस फॉर्म में उसको क्वालिफाई किया गया. But basically, it is information. That is the point. ठीक है? डिवाइसेस यूज करते हैं नेशनल होता है डेटा ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. So what is the point? मोस्ट कंप्रेस्ड ह्यूमन के रेस्पेक्ट में है तो लेकिन मतलब यूनिवर्स के You are not understanding the point. Okay, online any questions? Divya Thare, Shama Devi Dasi. Yes, Divya Mata. प्रभु जी डैमरप का नाम. आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए. हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कुछ दिन पहले आपने बताया था कि प्योर डिवोटीज की कॉन्शियसनेस
जो पूरी तरह से ब्रह्म रियलाइज कर चुके हैं वो ये भी जान सकते हैं कि ब्रह्मा की चेतना में क्या चल रहा है, मतलब दूसरे जीवों की चेतना में क्या चल रहा है, एंड ये सब भी जान सकते हैं और उनको पूरे यूनिवर्स का नॉलेज हो जाता है। पर आज आपकी क्लास में आपने बोला कि हमारा एक सर्टेन एक्सपीरियंस होता है, तो प्योर डिवोटीज में ऐसा कृष्ण क्या करते हैं, मतलब जैसे जैसे हम भक्ति में क्लियर एडवांस होते समझ हैं। में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपने बताया था ना जैसे प्योर डिवोटीज होते हैं वो ब्रह्म रियलाइज होते हैं, है ना, उनको ये भी पता होता है कि ब्रह्मा के कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, उनको पूरे यूनिवर्स का नॉलेज होता है। तो जैसे आज आपने बताया कि हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत एक पर्टिकुलर जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर प्योर डिवोटीज में ऐसा मतलब कृष्णा डिवोशनल सर्विस से ऐसा क्या होता है कि प्रभु जी कि उनको इतना पूरे नॉलेज होता है कि इसमें क्या चल रहा है एंड वो उनके कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है, उनको इतना नॉलेज कैसे रहता है? या वेरी सिंपल, हमारा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है लेकिन भगवान लिमिटेड नहीं है ना। प्योर डिवोटी हैज एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन, वही तो बताया ना मैंने लेक्चर में। कृष्णा सारे इंफॉर्मेशन देते हैं उनको। जो भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है कृष्णा प्रोवाइड्स, इसलिए प्योर डिवोटी होते हैं। वो एसेंस में सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक दिस, आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन सारे इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सेस नहीं करते। जब जो चीज जरूरत पड़ेगी तब वो एक्सेस करते हैं। तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हजारों किताब है। हाँ, वो सब है आपके पास। जरूरी नहीं कि हर समय हर चीज आपके माइंड में रहे, लेकिन जब जो चीज जरूरत है वो चीज आप निकाल के पढ़ सकते हो। इसलिए तो प्योर डिवोटी एसेंस में सब कुछ जानते हैं, पर कोई भी चीज जब करने की आवश्यकता पड़ती है तो देन ही गेट्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भगवान के साथ जुड़े हुए रहने से हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा कुछ चैट में भी है। बिफोर दैट आपको मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट साउंड कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड अगेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। Sound can be in different forms. So audible जो हमको humans के लिए audible है, that is different. That is one form of sound. But whereas on the higher planets, the different type of sound. I already told you. फिर उसमें फिर से वही पूछ रहा हूँ कि sound is not the best and not. That is your limited understanding. That is one type of sound. I told you again 2-3 times. You're not understanding the point. हाँ, ऑलरेडी मैंने वो बात पॉइंट बोल चुका हूँ एंड फिर से वही आप, यू आर अगेन गोइंग बाय द साइंटिस्ट डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड को साइंटिस्ट जो डेफिनेशन दे रहे हैं उस बेसिस पे आप जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग बाय साइंटिस्ट डेफिनेशन, वी आर गोइंग बाय आवर ओन डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड मीन्स वाइब्रेशन व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन। Humans have a limited ability to understand, to hearing capacity. But whereas other beings have a different form of sound. Like,
कुछ क्वेश्चंस चैट में भी हैं। शशिमुखी, वो है नहीं अभी शशिमुखी। वो तो कमेंट है सर। ओके, यशोदा नंदन प्रभु, आर यू देयर? Yeah, you there. Why these types of codes are given to humans? Is it safe in the demigod? It is safe in the demigod's hands, and we want it just like with the purpose. तो humans को क्यों दिया जाता है? Humans को नहीं है humans. Only very very rare cases दिया गया. Even अर्जुन के टाइम पे भी पूरे पृथ्वी में शायद कुछ ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इसकी नॉलेज है. It is not given to everyone. और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है. सेम, ठीक है. और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी. श्यामा माता जी. प्रभु जी ये पूछना था कि अभी आपने जो आवाज बताया धीमे से आ रही है, मतलब सुन नहीं पा रहा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. आवाज जा रही है प्रभु जी? जा तो रही है लेकिन लाउड नहीं है. ठीक है, और पास में जाओ, मतलब माइक के पास में आके बोलो. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी ये पूछना था कि अभी आपने जो बताया है कि 3 शक्तियां जो प्लान को चलाती हैं, तो उसमें क्या क्या आपने बताया प्रभु जी? इच्छा था और एक कोई प्लान, और फिर उसके बाद इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति. क्रिया शक्ति. इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति. ओके प्रभु जी. तो प्रभु जी ये प्रिया शक्ति क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या? क्रिया शक्ति मतलब कोई भी कार्य कराने की शक्ति, करने या कराने की शक्ति. ओके प्रभु जी. और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, ये जो आपने शक्ति और शक्तिमान जो स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी जो शक्ति जो है डिपेंड नहीं होती और शक्तिमान जो डिपेंडेंट है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या प्रभु जी? शक्ति हमेशा शक्तिमान के ऊपर डिपेंड होती है. शक्तिमान डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन के अनुसार शक्तिमान की इच्छा और उनकी डायरेक्शन के अनुसार शक्ति काम. तो शक्तिमान इज अ सोर्स, मतलब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शक्ति, और वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों आते हैं कहां से? शक्तिमान से. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम. शक्ति डिपेंडेंट है शक्तिमान के ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं होती. जैसे गीता में भगवान बोलता है ना, मैं अध्यक्षेण प्रति सूयते, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, नॉट इंडिपेंडेंट. कोई भी मशीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मशीन इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन हु नहीं कंट्रोलिंग इट. कैसे? राधा सखी माता जी, आपका क्वेश्चन था और हैंड नीचे कर लिया. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही. जी प्रभु जी, आज जैसे आपने मेंशन किया कि ब्रह्मास्त्र या ये जो भी अस्त्र होते हैं, ये कोड होते हैं ना, ये मंत्र होते हैं, इनको डिकोड किया जाता है. तो फिर जो इन लोगों के पास अस्त्र होते हैं, जैसे अर्जुन के पास गांडीव था या ये, तो फिर इनका क्या यूज है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो अस्त्र नहीं होते और बाकी
ये युद्ध में इन लोग अस्त्र यूज करते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाई प्रभु जी इसको। वो भी कोड्स होते हैं। हर अस्त्र एक कोड ही है, वो दूसरा कोड है। ब्रह्मास्त्र एक पर्टिकुलर कोड है जिससे ब्रह्म ज्योति का शक्ति यूज किया जाता है, और अग्निअस्त्र ऐसा कोड है जो अग्नि को एक्टिवेट करता है। वायु अस्त्र एक कोड है जो वायु को एक्टिवेट करता है। तो वो अपने धनुष के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर, सबके पास अपना अपना धनुष और ये बाण होता है ना, तो वो कैसे यूज किया जाता है कि धनुष के थ्रू यूज नहीं करते, या गांडीव कभी यूज ही नहीं करते, सिर्फ कोड ही बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं सब, ये धनुष बाण को यूज करना जरूरी नहीं है। ओके। जैसे बलराम जी ने क्या किया, घास का तिनका उठाया और जी, मंत्र के वो घास का तिनका ही, तिनके के अंदर ही वो अस्त्र। उसी का अस्त्र बना लिया। जी प्रभु। पर उसके बिना भी सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही कर सकते हैं, बिना किसी वस्तु के भी, सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही व्यक्ति को खत्म किया जा सकता है। ओके, तो समटाइम दे यूज गांडीव और दे डोंट, ऐसा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कब यूज करना है और कब नहीं करना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज को कोडिफाई क्यों करते हैं, ताकि हम उसको यूज कर सकें। अगर कोई कोडिफाई करे लेकिन आप यूज नहीं कर पाओ तो क्या फायदा। सो मंत्र ऐसा कोडिफाई किया गया, ऐसे इंजीनियर किया गया, ऐसे बनाया गया है ताकि just in a very short time you can just say it and then it is activated. तो में से उसको और भी कंप्रेस कैसे, और कंप्रेस करोगे तो आप बोलोगे कैसे, और उसको एक्टिवेट कैसे करोगे, राइट? You should be able to do it with the most ease, correct? हम क्या कर सकते हैं, ये तो बटन दबा सकते हैं, ऐसे शस्त्र चला सकते हैं, या कुछ आवाज कर सकते हैं, which is the easiest. इसलिए आजकल डिवाइसेस भी वॉइस एक्टिवेटेड। So producing sound from your throat is the easiest form of transmitting information. Say electronic magnetic radiations are more compressed. That is true, that may be true, but then आप कैसे उसको मतलब express कर पाओगे? So therefore sound is the best form of transmitting information by a human, correct? So कंट्रोल करते हैं, वो पता कैसे चलेगा? See, the thing is, Archis, in the universe, all the elements are in control. कैसे पता चलेगा? Because of logic. Just as हमारा शरीर को हम कंट्रोल करते हैं, इसी प्रकार से यूनिवर्स में भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसको we are also being controlled. Our body is just a small replica of the universe. जैसे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स में हर प्लैनेट को, हर एलिमेंट को भी कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म, राइट? एंड वो मैकेनिज्म है तभी तो देयर इज ए हार्मोनियस फंक्शनिंग, अदरवाइज दैट विल बी chaos. हार्मोनियस फंक्शनिंग से समझ में आता है दैट देयर मस्ट बी ए
a mechanism of control. Why the planets are not just skipping off the orbit? Why there is no so many ways it can be devastation can take place. But why that is not happening at all times? The pralay time pe hoga, but there is harmony. There is harmonious functioning, systematic functioning, in a way that we are able to live, grow, sustain on this planet. It is within our experience. So इसका मतलब ये है कि there is a mechanism where whole universe is also under the control of a supreme intelligence. From that we can deduct. Everything cannot be directly, immediately perceived, but from your intelligence, your reasoning, you can understand. Everything you cannot physically see. Physically, हर चीज आप देख नहीं सकते because your senses are limited. मेन बात यह है कि शास्त्रों में जो लिखा है, when you apply, then you will get the realization. You can't just sit. For example, आप साइंस के स्टूडेंट, I will not go to lab. मैं लैब में नहीं जाऊंगा, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, just go. No, you have to go to the lab and experiment. It is also like that. You cannot, शास्त्र में जो लिखा है आप बैठे बैठे डाउट करते रहोगे, it's never, you will always be in doubt. You will never be in knowledge. Only when you apply the shastras and you get the result by application, then you will gain that experience. And that is how, when things are verified, then you understand that the shastras is a code of information. This is correct. Everything you may not be able to verify. But if certain things are verified, then you will understand the other things also must be true. Right? And gradually, at some time, you can experience that also. जैसे अगर आप किताब में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, बहुत सारे थ्योरी लिखे, हर थ्योरी हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, आप 2-4 एक्सपेरिमेंट किए और उसमें आपको कुछ रिजल्ट आया, so then your trust in the entire book will become strong. इसके लिए भी कर रहे हो, I am telling you the processes. When you experiment and you get the result, then what do you do? Then if it turns out to be true, then your trust will increase. Like that. Even with a person, कोई एक व्यक्ति है, वो आपको कुछ बोल रहा है, आपको डाउट है सच है कि झूठ है, बाद में पता चलता है कि हाँ सच बोला उसने, फिर अगली बार भी कुछ बोला, उसके बाद भी फिर चेक किया तो सच निकला, ऐसा 2 बार 4 बार 10 बार होगा, तो देन व्हाट यू विल हैपन, ओके ये पर्सन जो बोलता है सच बोलता है, तो देन यू विल, उसके बाद 10 बार आप सच निकला तो 11वीं बार भी ट्रस्ट करो, एंड विद दैट ट्रस्ट यू विल गो अहेड, एंड देन आफ्टर सम टाइम अगेन यू विल अंडरस्टैंड कि ये भी आदमी सच निकला. So unless you experiment and you apply, there is no way you can understand that it is true. Correct? But if you rely only on sense perception is by default is always limited. Sense perception हमेशा limited ही रहेगा. तो आप कभी भी उस पाथ पे complete knowledge तो कभी gain कर ही नहीं सकते. लेकिन इस पाथ पे जरूर complete knowledge gain कर सकते हैं, because here the knowledge is coming from supreme source. It is given, handed down from the perfect source. Therefore, there is an element of faith, but वो faith ऐसा नहीं कि blind faith. आपका कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस के कारण आपने थोड़ा फेथ इन्वेस्ट किया और उसके बाद आप उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने से और फेथ बढ़ा, अप्लाई करने से आपको रिजल्ट आया, then your faith increases. So that way your faith is in not just one statement but the entire scriptures. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गीता का एक लाइन पे बिलीव, जब गीता पे बिलीव करते हैं तो गीता के सारे स्टेटमेंट्स पे बिलीव करना है. You can't say मैं आपके आधे बातों को बिलीव करता हूँ, आधे बातों को बिलीव नहीं करता. Not like that. When you trust someone, you trust him fully. 100%
So it is, there is no such thing as 99%, 100%. It is when you apply, your faith will increase. It is ever increasing level of faith. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलेंगे प्रभु जी आप आंख बंद करिए, I know that मैं आंख बंद करूंगा तो तुम कोई मुझे चाकू नहीं चुभाना, because I trust you. Right? Similarly, and then when आप बोलोगे अब आंख खोलिए, then मैं आंख खोलूंगा तो सामने कोई गिफ्ट है, something like, right? So my trust in you is increasing. Like that. So therefore, we have to place trust in God. We have to place trust in Scripture, but not that it is blind trust. We have already experienced certain things that are true, like for example, existence of soul, and so many other things, three gunas, law of karma. Many things are which we experience, which we see from our own experience also as true. So from that we have some faith in the Scripture, or the Scripture says the information is for apply. And the more you apply the information in the Scripture, the more you will realize realization में परिवर्तित हो. And वो जितना realization में परिवर्तित होगा, उतना आपका faith और ज़्यादा strong होगा. गलत निकलेगा तो faith टूट जाएगा. But at least in my experience, मुझे तो मैंने जितना अप्लाई किया मेरे लिए. Now don't conclude it is गलत because of what scientists are. अगर आप अपने experience में, if you have felt that something is wrong, then yes, you can say ये गलत. But for thousands of years, many great people have applied, and time and time again, it only confirmed to be true. आप बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है, साइंस का टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में अगर एक भी चीज एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग हुआ तो आई कैन से कैन रिजेक्ट द बुक. बट एक्सपेरिमेंट आप पहली बार आप ही थोड़ी कर रहे हो. So many thousands and lakhs of people have already experimented all those things for so long. It has been proved to be true. It is not that कल ही टेक्स्ट बुक लिखा गया और आज ही तुम एक्सपेरिमेंट करो. बहवो ज्ञान तपसा पुता मध्याम. So many people in the past, even गीता से भी पहले भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके परफेक्शन पा चुके हैं. इवन अर्जुन से भी पहले, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जुन ऐसे कह रहे हैं. It has been time tested. It has been time tested by so many people, and at the same time फिर भी आपको blindly believe करने की जरूरत. फिर भी you can apply in your own life also, and it is bound to also turn true, just as it turned true for so many. And when it turns true, then your faith will become more solidified. Theoretically, yes, अगर आपका लाइफ में ट्रू नहीं निकला तो you can say that it is not true. But वैसा नहीं होने वाला, because many people even today are applying it. और सब तो काम करता है, मतलब यही जैसे एस्ट्रोनॉमी. So I will stop here. Task का time.